Subscribe to OZiva TV and hit the bell icon for more updates on fitness, nutrition and wellness. नमस्ते, मैं हूँ पारोमिता, the happy yogi. I am a yoga teacher and today I am going to teach you the right way to do Padmasana. First, learn to sit in half Padmasana or half lotus. Always remember to practice it on both the legs. So if you have sat with your right leg on top at first, then also practice sitting with your left leg on top first and then bring the right leg on top. सबसे पहले आप ज़मीन पर बैठ जाइए और legs को सीधा कर लीजिए. Then fold your right leg on top of your left thigh. राइट हील को लेफ्ट हिप जॉइंट के जितने करीब ला सकते हैं उतने करीब रखिए. देन फोल्ड योर लेफ्ट लेग एंड ब्रिंग इट ऑन टॉप ऑफ योर राइट थाई. अगेन हील को हिप जॉइंट के बिल्कुल पास लेकर आइए. देन शिफ्ट योर बॉडी वेट टूवर्ड्स योर नीज. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, कीप योर पाम्स ऑन योर थाइज फेसिंग अप एंड सिट अप टॉल. अगर ये करने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि पैर ऊपर तक नहीं आ रहा है, देन यू कैन कीप द बाइंड स्लाइटली लूज. आप ऐसे भी रख सकते हैं. अगर दूसरा पैर बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ रहा है, आपको एंकल में पेन हो रहा है, देन यू कैन कीप अ ब्लॉक और अ कुशन एंड कीप द लेग ऑन टॉप ऑफ दैट. दिस विल प्रिपेयर यू टू फाइनली बी एबल टू टेक योर लेग अप ऑन योर थाई. अगर लेफ्ट लेग को ब्लॉक पे भी रखने में तकलीफ हो रही है तो लेट इट बी डाउन, कीप इट डाउन एंड लूजन द फर्स्ट लेग एज वेल. अगेन सिट अप टॉल, shift your weight towards your knees. Practice these postures and drills regularly and trust me, you will get your Padmasana soon. If you have any questions or any queries, do let me know in the comment section. If you like this video, don't forget to hit the like button and also let your friends and family know. You can share through WhatsApp, through Instagram. Don't forget to tag me at the Happy Yogi with double I and OZiva Nutrition. I will be back soon with more such fun and informative videos. Don't forget to subscribe to OZiva TV. Till then, goodbye. Namaste.